अच्छा, but do send the recording to me today only, right? Because I have to upload it on the LMS. Okay. Acha, let's do this question. I'll hold my screen like this. ठीक है? Acha. Now you tell me what is the, you can have, take 1 to 2 minutes. What is the name of this tissue? What tissue is this? It's the bone marrow. Very good. The bone marrow. Okay. Label this process and also label this process. The mitosis. Very good. This is mitosis and this is also mitosis. Label this process. Maturation. Good. Maturation. Label this process. Mitosis. Very good. This is also mitosis. Achha. What are these cells? Are they okay? Plasma cells or memory cells? Plasma cells. Very good. Why did you say plasma cells? Those are producing antibodies. And this one is the Memory cells. memory cell. Now you got the idea? Yes, miss. ठीक, सही. ये हमने कर लिया और Cell Z is responsible for long-term immunity to measles. Name cell Z and outline its role. तो हम इसका रोल करते हैं अभी कि the screen is shared, right? Yes, miss. हाँ, पता नहीं क्यों ऐसे मैसेज आ रहा था, right? ओके, सो सेल Z अगर इसका 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है? 3 मार्क में से 1 मार्क तो है इसलिए कि आपको बताना है कि व्हाट इज सेल Z, तो बता दिया. व्हाट इज द रोल ऑफ सेल Z, तो आप ये कहोगे हमने देखा था मैरी जोन्स में कि द मेमोरी सेल वाज मेकिंग द प्लाज्मा सेल, है ना? वापस से जाके देखते हैं इसको क्या कर रहा था मेमोरी सेल, और से देखते हैं. मेमोरी सेल ये रहा, मेमोरी सेल वाज मेकिंग द प्लाज्मा सेल, है या नहीं? ये मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल बना रहा है, राइट? अच्छा, फिर जाते हैं उस पे. So the job of the memory cell is that it makes plasma cells. When on a second exposure to the antigen, they recognize. What's the advantage? They allow the plasma cells to rapidly form lots of antibodies. ठीक है? So this is how you are going to answer the question. कि memory cells का क्या काम है? कि वो plasma cells बनाते हैं upon second exposure to the same antigen. ठीक है? Because they recognize it since they are memory cells, and then following that, the plasma cells will be able to secrete large number of antibodies. अच्छा, so up till now what have we covered? We have covered B cell. नहीं, sorry, हमने क्या क्या cover किया? हमने cover किया, let's go back. We started with the basics of specific or adaptive immunity. We did the 2 types of immunity given by T lymphocytes and given by B lymphocytes. फिर हम B cells की detail में गए. हमने B cells की maturation पढ़ी. We studied the clonal selection, the clonal expansion and the complete flow chart. Finally कि अब antibodies बन गई हैं. अच्छा, antibodies बन गई. अब होगा क्या? What is the body going to do with the antibodies? तो उसके लिए we are going to study this concept map, और वो मैं कराऊंगी, and with that I'll finish today's session. So this is what happens inside your body once antibodies are made. जहां भी आपको Y shape structure नजर आ रहा है वो antibody है, and this concept map has been taken from your textbook, जिसमें there are 6 different ways by means of which the antibodies can give you protection, or by means of which the antibodies can give you immunity. कैसे हम बचेंगे
antigen से. So all those 6 ways have been described. Again, go through each and every way, बल्कि एक एक वे पे आप go through करो और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं. पहले आप वे नंबर 1 जो है खुद से पढ़ो and then I'll ask you. So I read it. Read it. क्या समझ आया इससे? What is happening in the first diagram? The antibodies, they join with the virus or any toxin, so they cannot go inside the cell. Oh, sorry. The antibodies? They combine with the viruses and bacteria, so they cannot go inside the damaging cell. Okay. Correct. Second one. What is happening in the second one? What is this? The bacteria. What is this? Bacteria, because it has flagella. So all the antibodies are attaching to the flagella. The flagella is that part of the of a bacterium that gives it that gives the bacterium its virulence or its pathogenicity. हम कहते हैं कि ये सारे microorganisms pathogenic हैं, मतलब कि they are capable of causing disease. So one of the features that makes a bacterium pathogenic are its flagella, क्योंकि उसके जरिए से वो swim करते हैं, उधर उधर भागते हैं, right? So what are these antibodies doing? They are sort of sticking to the flagella, which makes them difficult to swim around and move here. जब वो swim ही नहीं कर सकेंगे, तो बड़े आराम से जो है ना, क्या होगा कि when they become less mobile, they can be easily caught and engulfed by the phagocytes. So वो phagocytes को help कर रहे हैं. तो अब आप एक नई चीज इसमें देख रहे हो कि बात एंटीबॉडीज की हो रही है, राइट? एंड एंटीबॉडीज बिलोंग टू द, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी ना, है ना? लेकिन फैगोसाइट्स तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है. तो ये क्या हो गया? Non-specific immunity or specific immunity आपस में they are interacting, right? So this means that in reality, although we do teach you separately, but in reality these two different kinds of immunity never work in isolation. They are interrelated, intercommunicating with each other, correlating with each other, right? So antibodies are sticking to the flagellum, making this bacterium less mobile so that it can be easily phagocytized by the neutrophils. Third process. Third में देखो क्या हो रहा है? And explain to me what's happening. The antibodies clump together. Antibodies with multiple antigen bindings. अब ये बड़ी different antibodies हैं. These antibodies ये बाद में मैं कराऊंगी, not today because that's a separate topic. These antibodies are of this shape and these antibodies are of this shape. So since they are of a different shape, so they can sort of clog or clump all the bacteria together. अब अगर सारे bacteria को हम एक जगह जमा करके ऐसे कर देंगे, so the chances that they will spread in the body will be minimized. Third way. Let's look at the fourth way. What's happened in the fourth way? They punch hole in the bacteria's cell wall. They punch hole in the bacterial cell wall. अब ये आपकी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो आपने किया होगा ना चैप्टर 1 में, तो ये आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल है. इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? परिशे याद है कुछ? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल? Made out of peptidoglycan. पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है. अच्छा, अब पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ है ये. क्या होगा कि अगर हम बैक्टीरिया के सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज द सेल मेम्ब्रेन. एंड सेल मेम्ब्रेन के पास इतनी ताकत नहीं है कि इट रेजिस्ट द प्रेशर्स दैट आर एक्सर्टेड फ्रॉम
the environment, the watery environment outside the cell membrane. तो जैसे ही cell wall टूट जाएगी, cell membrane will be exposed to the water around it. फौरन पानी अंदर आएगा, cell membrane को break कर देगा and the cell will burst. तो बैक्टीरिया की सबसे जो important चीज है ना, with which it survives, is the cell wall. So if the antibodies can punch holes in the cell walls, this means the job is done. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फिफ्थ वाला जो प्रोसेस है ना. लेट मी जस्ट रब ऑल दिस. इसको बहुत गौर से देखना है. द फिफ्थ वे बाय मींस ऑफ व्हिच द एंटीबॉडीज दे एक्ट. इस फिफ्थ वे को आपको कनेक्ट करना है विद फैगोसाइटोसिस, जो हमने लास्ट टाइम किया था. अगर याद आ रहा है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं याद आ रहा तो आई कैन ऑल्सो टेल यू. लेकिन थोड़ा सा सोचो, जहन पे जोर दो. As the phagocytes can identify the bacteria that has antibodies then, so it can easily adjust them. Repeat what you said. I'm saying the phagocytes can identify the bacteria then. वो तो बिल्कुल सही आपने बोली. अब आप मुझे बताओ, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी है? हुज सेल मेम्ब्रेन इज दिस? The damaging cell. नो, इट्स द फैगोसाइट. इट्स द फैगोसाइट. देखो कैसे. आई टेल यू हाउ. लेट्स गो बैक एंड लुक एट दैट डायग्राम जो हमने बहुत पहले किया था. ये हमने किया था यहाँ पे. ये देखो, हमने किया था ना कि दिस इज द फैगोसाइट, है ना, न्यूट्रोफिल है, बैक्टीरिया आ रहा है. अब एक तरीका तो ये है कि द बैक्टीरियम डायरेक्टली अटैचेस टू द न्यूट्रोफिल मेम्ब्रेन एंड द न्यूट्रोफिल मेम्ब्रेन कैन इनगल्फ इट. दूसरा तरीका ये है कि यही बैक्टीरिया कौन पुल करके लेके आ रहा है? द एंटीबॉडी. So this means that one of the way by means of which the antibody gives us immunity is that the antibody can mark a bacterium. It can tag, इस पे टैग लगा दिया. अब वैसे ये बैक्टीरियम नहीं देख पा रहा था फैगोसाइट, लेकिन एंटीबॉडी ने जिसको टैग लगा दिया ना, उसके टैग लगा देने से क्या हुआ कि द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फैगोसाइट सॉर्ट ऑफ रिकग्नाइजेस इट. उसके टैग लग, क्यों रिकग्नाइज किया? क्योंकि फैगोसाइट की सेल मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर लगा हुआ था जो कि इससे कॉम्प्लीमेंट्री था. अब इसी चीज को आप इस डायग्राम में देखो दोबारा से, एंड ट्राई टू मेक अ कनेक्शन विद इट एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक अ सेंस विद इट. ये देखो, अब समझ आई बात. दिस इज योर सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द फैगोसाइट, जो कि अब इस बैक्टीरियम को इनगल्फ करना चाह रहा है. ठीक है. ये बैक्टीरियम वैसे अगर ऐसे अलग से होता है यहाँ पे ऐसे करके, तो इट वुड नॉट हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय दिस फैगोसाइट. लेकिन क्यों रिकग्नाइज हुआ? बिकॉज इट वाज टैग्ड और इट वाज मार्क्ड बाय द एंटीबॉडी. और कैसे रिकग्नाइज किया? क्योंकि फैगोसाइट के रिसेप्टर के सेल मेम्ब्रेन पे ऐसा रिसेप्टर लगा हुआ है जो कि एंटीबॉडी की इस वाला जो आर्म है ना उससे कॉम्प्लीमेंट्री है. So this means one of the ways by means of which antibodies can protect us is that they coat bacteria, they tag bacteria, sort of they're dragging them and making it easier for the phagocytes to digest them. Why? Because phagocytes have got receptor proteins. ये रहे वो receptor proteins for the heavy polypeptide chains of the antibodies. ये heavy polypeptide chains क्या हैं? ये हम next time करेंगे. बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, miss. मजा आ गई ना अच्छी तरह से? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट. अच्छा, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सिक्स वे. Sixth way is very easy to understand. Yes, what is it? And explain it to me in your own words. The antibody neutralize the toxins. Toxins? They neutralize the toxin. Okay.
So these are the 6 ways. Miss, is the toxin a neutral term that we will use for bacteria and viruses? Yes. It's a neutral term. Read this paragraph yourself, and once you're done, you tell me. I'll scroll the page from here. The first or primary immune response. ये पढ़ो जरा. Can you scroll? Hmm. Read it. Okay. Read this also. So I read it. अच्छा. Now stop the meeting.